terms. So sum of n terms is n by 2 into 2a plus 2a plus n minus 1 into d. This is one way of expressing the sum of n terms. Third switch. And what is the other way of expressing the n terms? N by 2 into a plus l, where l is the last term or the nth term of the series. Okay, so this is, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि तीन फॉर्मूलेज हैं भाई साहब, ठीक है. सो व्हाट आर द थ्री फॉर्मूलाज? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू दिस एंड एस एन इज इक्वल टू दिस. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल. So these are the three formulas that we have for the entire AP. AP चैप्टर में यही तीन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं और जो आपको अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है. ओके, सो एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, लेट्स से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा अगर है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे. ओके, सो अगर हमने इसको तोड़ा, वैसे इस 2a को हमने a प्लस a लिखा, so obviously we know that this is the last term or the nth term, so we can also put this across as n by 2 into a plus an, or in some books this an is written as l, so that is the last term. Are we clear? Okay, find the sum of the following AP up to n terms. थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं मैं ये. ओके, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP up to n terms. चलिए बच्चा पार्टी, फटाफट फटाफट, एवरीवन, क्विक क्विक क्विक. So this is basically given as an AP. You have to find out the sum of the following AP. Okay, so how would you find out the sum? So here your A is how much, bacha badi? 2. And what about D? D is 7 minus 2, that is 5. So Sn, here n is how much? 10. So S10 will be equal to simple n by 2. पहले तो बार बार फॉर्मूला 2-3 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा. n by 2 into 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अगर आपको यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है ना तो सीधा लास्ट टर्म की वैल्यू डाल देना, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे एस हाउ मच? 10 विल बी इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2a, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज हाउ मच? 5. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? 10 बाई 2 इज 5, 2 2s are 4, 10 minus 1 is 9, 9 into 5. So this gives you how much? This gives you 5, 4 plus 9 5s are 45. So that will be 5 into 49. So this is how much? 9 5s are 45, 5 4s are 20, 245. ठीक है? Are we clear on this one, people? So this will be, without writing the AP or without even going to the last term, you can actually find the sum of n terms for a particular AP. So sum of n terms here, sum of 10 terms would be how much? 245. Are we clear to this formula? Okay, okay, okay. Let's look at this formula, bacha party, here. So here it is D is equal to, so this will be 245. Find the sum of the following terms. Sum of the following terms: 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. चलिए बच्चा पार्टी, क्विक क्विक, फटाक से, क्विक क्विक, इजी सवाल, एकदम से इजी सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है. ऑल यू नीड टू फाइंड इज ए एंड डी, बच्चा पार्टी. डन डन डन, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी. ओके, सो लेट्स सी दिस. ए हियर इज हाउ मच? 0.6. What will be the value of D? 1.7 minus 0.6, that gives you how much? 1.1. Sum up to 100 terms. So what is the value of n? Mahbub? n Sanjam? 100. So n will have a value of 100. Okay, you have to find out the value of Sn. Formula please, Sanket. Sn. Okay, n by 2 bracket into D. Okay, so n here is how much? 100 by 2.
2 into A, that is 2 into 0.6. Making sense, people? Okay, 2 into 0.6 plus n minus 1, that is how much? 100 minus 1 into D. D is how much, bacha body? 1.1. Okay, so if we happen to do this, this will be 50. So this will be 0.6 into 2, that is 1.2. 99 into 1.1. ठीक है, 99 to 1.1, so that gives you how much? 50. 1.2 plus 99, so this is 99 and 99, so 9 plus 9 80, 9 plus 1 10, so 108.9, 108.9. So this will be 50 into 9 plus 2 11, 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, 0 plus 1 1, and this is 1. So this is going to give you how much? 5 ones are 5, 0 5s are 0, 55, and this is 0. Okay, with 1 point, so this is 5505. So without even finding out all the terms or even the last term, you can actually find the sum of 100 terms for this particular AP by just using the formula. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one, बच्चा बड़ी? Okay, okay, okay. So this will be 100. So this is going to be how much? 5505. Find the sum of the following APs. So again, you have this question here wherein you have to find out the sum of the following APs. Quickest, fatafat. Bacha body, first you have to find out what? A. Then you have to find out D. Then N is already given as how much? 12. Okay. So let's find out A here. So A, value of A? Minus 37. A is minus 37. D, Yakshita, D will be how much? Minus 9? Nope. Yes? Good, very good. Minus 33 minus 37. बच्चा पार्टी, अगर आपने यहां पे सिर्फ माइनस लिख के छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा. माइनस 37 है, ठीक है. सो दिस विल बी minus 33 plus 37. 37 minus 33, that is 4. So D has a value of 4. D has a value of 4. A has a value of minus 37. Okay, now we have to find out the value of the sum of n terms. Kavya, n is how much? Now n is how much? n upon 2 लिखने वाले हो ना फॉर्मूला में, तो n है क्या? 12. Okay, so here the value of n is how much, बच्चा बॉडी? Given the value of n is 12. The value of n is 12. So we will write the formula once again. Sharayu, formula please. Sn is equal to, फटाफट, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Are we clear? Clear on this one? Okay, so let's write this formula. For S, how much you have to find out? 12. So S12 will be equal to how much? 12 by 2 into 2a. That's how much? 2 into minus 37 plus n minus 1. So that is 12 minus 1 into d. D, that is 4. D, that is 4. So this will be 6. Here we have 37 into 2, that is minus 74. So this will be minus 74. 12 minus 1, that is 11. 11 into 4, that is 44. Okay, so this will be 6 minus 30. 6 minus 30, so this will be minus 180. So S12 will be equal to minus 180. So sum up to 12 terms is minus 180. Are we clear? Clear on this one, people? So this is going to be how much? Minus 30. So this is minus 180. Okay, फटाफट से बच्चा बॉडी. The next सवाल. Find the sum of the following APs up to 11 terms. Up to 11 terms. Find the sum of the following APs up to 11 terms. फटाफट से करना है भाई साहब. क्विकेस्ट, जल्दी. शीतल, A की वैल्यू 1 upon 15. Okay, so A for this AP will become 1 upon 15. Okay,
D? Now 1 upon 12. Okay, so here the LCM will be how much? 12 और 15 का LCM कितना हो जाएगा? 60. Okay, so this will be basically 60. 12 5s are 60, 15 4s are 60. So this will be 1 upon 60. D is basically 1 upon 60. Okay, what is the value of n? Sharayu, value of n? 11. Okay, n is equal to 11. Okay, so यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? Sn. Sn का फॉर्मूला बताइए ज्योति. Sn is equal to n upon 2 n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d. ठीक है? Okay, so S11 here, S11 will be 11 by 2 into 2a. a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 by 15 plus n minus 1, that is n is 11 minus 1, 11 minus 1 into d. d is how much? 1 by 60, 1 by 60. ठीक है? Clear है? Clear है? Clear है? So what will we get here, बच्चा body? This will be 11 by 2, 2 into 1 by 15, that is 2 by 15 plus 11 minus 1, that is 10, 10 upon 60. So this will be 1 upon 6. So that is 11 by 2, 2 by 15 plus 1 by 6. Okay, okay, okay. So 11 by 2. So this will be how much? 15 and 6 will be how much? 30. Okay, LCM हो गया इसका 30. 15 2s are 30, 2 2s are 4, 6 5s are 30, 1 into 5 is 5. So this will be 11 by 2 into 9 by 30. Okay, so 3 3s are 9, 3 10s are 30. So this is going to give you how much? 33 by 20. This will be the answer, 33 by 20. Clear है? कुछ और आंसर आ रहा है? Clear? Are we clear on this one, people? Let's see the answer. No issues. So 11 टर्म्स तक इसको फाइंड करना है भाई साहब. आपका हो गया 1 by 60. So this is going to be how much, people? This is 9 by 30. So 33 by 20 is the answer. Okay. All right, people. In an AP, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमाकर सवाल दिया हुआ है. Given L, L मतलब क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी? What is L? The last term. Sn is equal to 144. There are total 9 terms. Find A. This is basically the सवालम. चलिए फटाफट, quick, 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 everyone. डन डन डन. जल्दी करना है बच्चा बाड़ी. क्विक क्विक क्विक. हो गया? डन डन. L is equal to 28, Sn is equal to 144 and there are total 9 terms. Find A. तो आपका देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? L is equal to 28, Sn is equal to 144 and there are total 9 terms. Total 9 terms. आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. You have to basically find out the value of A. Okay. So Sn can be written as what? N by 2 into A plus L. Okay. Okay, so Sn here is how much? 144. 144. Okay, n means what? N means 9 here. है कि नहीं? n की वैल्यू 9, 9 upon 2 into a की वैल्यू नहीं मालूम यहाँ पे. So we'll put this as a plus L. L is how much here? 28. Last term
the value of the last term here is 28. So these are the given things. You have to find out the value of a. Multiply this by 144, so this becomes 288. This is 9 into a plus 28. So if I take this 9 here, multiplication mode में है, तो इधर क्या हो जाएगा, division. So 288 by 9 is equal to a plus 28. So 288 by 9, 9 3s are 27, 9 2s are 18, a plus 28. So a की वैल्यू कितनी हो गई, 32 minus 28. So 4. a की वैल्यू हो गई 4. The value of a turns out to be 4. Are we clear? Clear on this one, people? Okay, okay, okay. So let's look at the answer here. L is equal to this. So the value of a turns out to be 4. Clear, clear, clear. Given a is equal to 3, n is equal to 8. So here you have been given the first term as 3, the number of terms as 8, sum of n terms as 192. You have to here find out the common difference. Quick, quick, फटाफट. युवराज फॉर्मूला Sn, फटाफट फटाफट फटाफट. n अपॉन 2. हाँ, यहां पे l नहीं दिया हुआ है. ना 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 ना, दो Sn के टर्म्स हैं, दो Sn के फॉर्मूलेज हैं. वन Sn is wherein you know the value of the last term, and the other in when you don't know the value of the last term. So Sn is equal to 2a plus n minus 1 into d, n by 2, or n by 2 into a plus l. Here is the last term known to you? Obviously not. A is equal to 3, n is equal to 8, Sn is equal to this much. So n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, let's put it, the values of whatever is given. So Sn is here 192, n is how much? 8. 8 by 2. 2a, that will be 2 into 3 plus n 8 minus 1 into d. 8 minus 1 into d. So this will be 192 is equal to 4. This is 2 3s are 6 plus 7d. Okay, if I bring this here, 192 by 4 is equal to 6 plus 7d. So this will be how much? 4 4s are 16, 4 8s are 32. So that will be 6 plus 7d. So 48 minus 6. So this will be 48 minus 6 is equal to 7d. That will be 42 is equal to 7d. So therefore d will be equal to 42 by 7. So this d will have a value of 6. D will have a value of 6. Are we clear? Clear on this one, people? Okay, okay, okay. Let's look at the answer here. So D will be 6. Okay. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? Okay. So यहाँ पे आपको AP दिया हुआ है बच्चा बाड़ी. So the AP starts with 9. The next term is 17 and so on and so forth. Okay. How many terms you have to take so that the sum of, so we will write whatever is given. Okay. Kavya, A, how much is it? फटाफट फटाफट 9. Okay. D, how much? Fatapat. 17 minus 9. Good. 17 minus 9. That is 8. Okay. How many terms of the AP? So basically you have to find out what? N is equal to how much? Okay. What else is given here? और क्या दिया हुआ है यहाँ? सम दिया हुआ है. तो Sn की वैल्यू कितनी है? 636. Are we clear? Clear on this one? Okay. Now putting the value Sn formula लिखकर, ठीक है? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, so Sn is how much? 636 is equal to n by 2. N is not known to us. ये आपको यहाँ पे quadratic equation देगा, ठीक है? So be careful about it. n by 2, यहाँ पे 2a मतलब कितना हो गया? 2 into 9 plus n minus 1 into d. d is how much? 8. Okay, so that will be 6 2s are 12, 3 2s are 6, 1 7, 6 2s are 12, 1 2 7 2. n यहाँ पे कितना हो गया? 18 plus 8n minus 8. Are we understanding this? So 1 2 7 2 is equal to n. 18 minus 8 कितना हो गया? 10. So this will be 8n plus 10. Are we understanding this? ये अभी एक quadratic equation बन जाएगा, ठीक है? We'll see how, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा बाड़ी? 1 2
72 is equal to 8n का स्क्वायर, 8n into n that will give you 8n का स्क्वायर, 10 into n that will give you 10n plus 10n. इसको डिवाइड कर दो भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 2 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना. सो 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा 12 और 2 36 जा, है ना. ठीक है. सो अगर हम इसको इधर ले लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. 636 इंटू 4 कर, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई साहब. इसको अपन ने इधर किया तो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ 636 इंटू 4 अगर अपन करते हैं, 6 4 जा 24, ठीक है, 3 4 जा 12, 13 14, 6 4 जा 24, 2 5 4 4. ओके. सो लेट्स से इफ आई डू, अभी हमको यहाँ पे एक ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से अपने को कितना मिले 5. ओके. सो 2 12 जा 24, 1 रिमेनिंग, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 18 जा 36, 2 15 जा 30, 2 9 जा 18, 9 plus 5 14, 1 15. So 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. Okay. So this will be 53 into 1. Now let's multiply this. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. So this is what? This is what? 48 into 53. अगर हम 48 into 53 करें, we will get 2544. और 53 minus 48 कितना आ जाता है आपका? 5. तो हम सीधा इसको splitting the mid term से क्या लिख सकते हैं? We can write this as 4n square plus 53n minus 48n minus 636. Okay. So okay, let's put this here because 48 is common with this. So we can write this as 4n square minus 48n plus 53n minus 636. So here we can take out what as common? 4n as common. So this will be 4n, n minus 12 plus 53 n minus 12. Okay, because 53 into basically 53 into 12 is 636. करके देख लो चाहे तो, ठीक है. 53 12 भी आएगा. 53 into 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 1, so 6, you are getting 636. Okay, so this can be written as 4n plus 53 into n minus 12 is equal to 0. तो आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है. सो वी विल सॉल्व इट दैट वे. तो ईदर वी विल से ईदर 4n plus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0. So 4n is equal to minus 53, that is n is equal to minus 53 by 4 or n is equal to 12. Okay. Now understand this people. ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, बट कैन द नंबर ऑफ टर्म्स बी अ फ्रैक्शन? नो. कैन द नंबर ऑफ टर्म्स बी नेगेटिव? नो. सो ये तो हम ले ही नहीं सकते. 1 2 3 4 5 ऐसा ही ले सकते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स. ओके. सो n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 is an impossible value, is an impossible value for number of terms, for number of terms. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? therefore n is equal to 12. ये वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, which is acceptable condition. Okay, so how many terms of the AP? So the answer is we need basically 12 terms of the AP must be taken. 12 terms of the AP must be taken to give a sum of 636. Are we understanding this people? समझ में आता? Okay. So यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हुआ है, ठीक है. बोथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ arithmetic progression as well as quadratic equation have been used in this particular sum. So again doing this, so this will be 8n square plus 18n, dividing throughout, same thing here. So we get so 53 into 48, so 4n square. So you will have answers as n is equal to minus 53 by 4 or n is equal to 12.
this is an impossible value for the number of terms. First of all, the number of terms cannot be negative, and secondly it can also not be a fractional or a decimal value. ठीक है, दोनों भी नहीं हो सकता. Okay, so n cannot be negative, so n is equal to 12. Are we clear on this one, people? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. Okay, okay, okay. Okay, show that A1, A2, A3 till AN form an AP where AN is equal to 3 plus 4N. Also find the sum of the first 15 terms. Quick, फटाफट. चलिए चलिए चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब. अभी आपके वैसे सवाल नहीं बोलेंगे कि N क्या होगा, A क्या होगा. ठीक है. अरे यार तुम फिर फ्रीज हो गए. मैथ्स के सवाल लगा उसमें. एलजेब्रा बुक लाया है, जब एलजेब्रा का पहला वाला एक्सरसाइज कर. हाँ हाँ, एलजेब्रा मतलब मैथ्स 1 ही होता है चाचू. चलिए वैसा इसको करना है फटाक से. शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP. क्विक क्विक क्विक, जल्दी से करना है फटाक से.
पांडे, डन डन डन. शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP. ओके, देखो यहां पे तुमको A नहीं मालूम है, D नहीं मालूम है, इनफैक्ट AP भी नहीं मालूम है, लेकिन इस फॉर्मूला को देखो. जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? सो विल स्टार्ट विद 1. ओके, सो फॉर N इज इक्वल टू 1, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जहां जहां पे भी N है वहां पे क्या डाल दोगे भाई साहब? 1 डाल दोगे. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? 3 प्लस 4 इंटू 1. सो A1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? 7. ठीक है, इसी तरह से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4 इंटू 2. सो दैट विल बी 3 प्लस 8. सो A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 11. इसी तरह से A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4 इंटू 3. सो दैट विल बी 3 प्लस 12. सो दिस विल बी 15. सो A3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 15, A2 की 11, A1 की 7. ठीक है, अब कर लो भाई साहब. अभी आपका A1 मतलब क्या हो गया? A. सो देयरफॉर AP क्या हो जाएगा? AP आपका क्या हो गया? देखो AP इज 7, 11, 15. 7, 11, 15. दिस इज बेसिकली द AP. सिंपल. आर वी क्लियर? दिस वुड बी द AP. ओके, सो इस AP का फर्स्ट टर्म बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म A विल बी 7, D विल बी इक्वल टू 11 माइनस 7, दैट इज 4. ठीक है, so you have to find out the sum of the first 15 terms, which means n is having a value of what? 15. So Sn here will be how much? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this will be Sn, that is S15 will be equal to 15 by 2, 2a, that is 2 into 7 plus 15 minus 1 into d, that is 4. Okay, so this will be how much? 15 by 2, 7 2s are 14 plus 15 minus 1, 14 into 4. So this is going to be 15 by 2. This is 14 plus 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5. Okay, so this is going to be 15 by 2, and this is 56 plus 14. So 6 plus 4 is 10, 5 plus 1 is 6, 1 7. So this will be 2 35s are. So 15 into 35. So 35 into 15. 5 5s are 25, 3 5s are 15, 16, 17, and this is 35. So 5, 7 plus 5, 12, 3 plus 1, 4, 1, 5, 525. So this is going to be 525. So sum of the first 15 terms is 525. Are we clear on this one? Bacha party, is this clear? Clear hai? Okay, okay, okay. So this will be the sum of the first 15 terms. So here A1, A2 की वैल्यू 11, A3 की वैल्यू 15, तो D की वैल्यू आ गई भाई साहब. So D is constant, the given list of numbers. So this will be what बच्चा पार्टी? 35 into 70, 525 आया था अपना. Okay, so the sum of the first 15 terms is 525. Okay, चलिए भाई साहब, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है यहाँ पे. So obviously your D will be positive. Okay, divisible by 6, divisible by 6. Find the sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6. पहला नंबर जो डिविजिबल बाई 6 होगा वो क्या होगा? क्यों 6 नहीं होगा? 6 भी तो जाएगा ना भाई साहब. ठीक है, ओके. सो दिस विल बी 6. सो व्हाट इज द AP? AP क्या हो जाएगा आपका? देखो, दिस विल बी 6, देन 12, देन 18 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे 40 नंबर चाहिए. ठीक है,
तो इस AP में A क्या हो जाएगा 6 और इस AP में D क्या हो जाएगा 6. हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स डू यू हैव इन दिस AP? It's given already 40. N is equal to 40. Find the sum of the first 40 positive integers. So you have to basically find out Sn, that is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S40 will be equal to 40 by 2, 2a, that is 2 into 6 plus n is 40, 40 minus 1 into d, d that is 6. So 40 by 2 is 20, 2 6 is 12, 40 minus 1 is 39 into 6. So this is going to be 20, this is 12 plus 9 6 are 54, 6 3 are 18, 18 plus 5 23. So this should be 20, 4 plus 5 6, 3 plus 1 4, 2 46. So this is going to be 6 2s are 12, 4 2s are 8, 1 9, 2 2s are 4, 4 9 2 0. Are we getting this, people? Find the sum of the first 40 positive integers. So this will be the sum 4920. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Find the sum of the first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8. फटाफट करना है भाई साहब. 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो आपका भाई साहब टेबल क्या बन जाएगा यहां पे? शरायु क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एपी? 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. एपी क्या हो जाएगा? 8. फिर अरे 8 की टेबल बोलो ना भाई साहब. 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. ऐसा चलता जाएगा भाई साहब. सो ये हो गया आपका एपी. दिस इज बेसिकली द एपी. ओके. And what is the first term of this AP? Obviously it will be 8. What is the common difference out here? 16 minus 8, that is 8. Clear? This would be the common difference. You have to find out the sum of the first 15 multiples. 15, which means n is having a value of what? 15 multiples of 8. So you have to find out the sum. So Sn, again Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this will be S15. S15 is equal to 15 by 2. 2a 2 into 8 plus 15 minus 1 into d. 15 minus 1 into d, that is 8. तो ये हो गया आपका 15 by 2. Then this will be how much? 16 plus 14 into 8. 15 by 2, this will be 16 plus 4 8s are 32, 8 1s are 8, 9 10 11. Okay, so this is going to be how much? 15 by 2, 6 plus 2, that is 8, 1 plus 1, that is 2, 128. So 2 6 are 12 and 14. So 15 into 64, 64 into 4, 960, 5 4s are 20, 6 5s are 30, 32. Then we have 64. So this will be 960. 960. This is going to be 960. Are we clear? So S15 is how much, bacha body? 960. So the sum of the first 15 multiples of 8, that's going to give you how much? 960. Clear? Are we clear on this one? Okay. So sum of the first, it is okay. The sum, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 terms is 289, find the sum of the first n terms. Okay, चलिए वैसा करना है फटाफट क्विक. नोटिस कीजिए यहाँ पे आपको A भी नहीं मालूम है और D भी नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? सवाल ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मालूम है तो, है ना? ओके, यू विल बेसिकली अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म इज A and the common difference is D. Okay, so here your assumption will be, let the first term be A and the common difference be D. Okay, sum of the first 7 terms of an AP is 49. Thank you. How will you form the equation?
सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या करेंगे? ओके, Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is basically the formula for Sn. So first you have to find out the sum of the first 7 terms. 7 terms मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? S7 is equal to 7 by 2 into 2a. A is not known to us, n is known to us, that is 7, 7 minus 1, that is 6, 6d. ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट, यहां पे आप S7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन यू राइट? 49 इज इक्वल टू 7 by 2 एंड दिस इज 2a plus 6d. ये 7 और ये 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 14. दिस इज इक्वल टू 2a plus 6d. गेट दिस डिवाइडेड बाय 2, सो दिस गिव्स यू 7 is equal to a plus 3d. 7 is equal to a plus 3d. Are we clear on this one, people? This becomes your equation number 1. Clear? Are we clear? Okay. Now, sum of the 17 terms is 289. Sum of the first 17 terms. So here, S17 is equal to, S17 will be equal to 17 by 2 into 2a plus 17 minus 1 into d. ठीक है?